Hello students, in this video I will continue to teach you about the hybridization. But now today our topic is hybridization involving d orbitals. In my last video I have told you about the hybridization of sp, sp2 and sp3. In sp, what is the resultant was? We have two sp hybrid orbitals where and the bond angle is 180 degree whereas the shape is linear. Example BeF2, BeCl2, BeH2 and so on. While in sp2 we have three sp2 hybrid orbitals in which the bond angle is 120 degree and the shape is trigonal planar. The example is BF3, aluminium chloride and so on. The third one was sp3 hybridization in which we have 4 sp3 hybrid orbitals in which your bond angle is 109 degree 28 minutes and the shape was tetrahedral. Example CH4 etc. This was a brief description of the last video. Today I will discuss about the hybridization involving the d orbitals, that is sp3d, sp3d2 and sp3d3. Now, according to the Aufbau principle, we have the increasing energy levels, and the increasing energy levels is in the order 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, and then comes your 4p. Now, in this, one thing you have to make it very clear when you are dealing with the d orbitals. We have to make it very sure in our mind that the energy of 3D shell is comparable to 3s and 3p orbitals. Also, the energy of 3D orbital is comparable to the energy of 4s and 4p orbital. यानी कि 3s, 3p और 3d हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं. उसी तरीके से बेटा 3d, 4s और 4p हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं. मतलब ये जो d ऑर्बिटल है 3d वाला, ये s और p के संग भी मिक्स हो सकता है थर्ड शेल के. यही जो 3d ऑर्बिटल है वो 4s और 4p ऑर्बिटल के संग भी मिक्स हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा कि यहाँ पे जो डिफरेंस होता है 3p का और 4s का ये बहुत ज़्यादा होता है. इसीलिए कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में 3p और 4s इन्वॉल्व नहीं होते हैं साइमल्टेनियसली because of the inner difference in the energies. तो जल्दी से ब्रीफिंग दे देते हैं बेटा. जो ये 3D होता है ये 3s और 3p के संग इसकी एनर्जी कंपैरेबल होती है, इसीलिए ये इनके संग हाइब्रिडाइजेशन शो करता है. इस 3D की एनर्जी 4s और 4p से भी कंपैरेबल होती है, इसीलिए ये 4s और 4p के संग भी हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है. लेकिन इसकी एनर्जी 3p की और 4s की एनर्जी कंपेरेबल नहीं होती है, इसीलिए हम 3p और 4s, ऐसा नहीं होगा कि 4s और 3p और 3d को मिक्स कर देते हैं, नहीं. तो 3p और 4s की एनर्जी कंपेरेबल नहीं होती है, इसीलिए ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे एक साथ. साइमल्टेनियसली दे आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन. ये बेटा अभी छोटी छोटी बातें होती हैं, जब आप आगे के कंसेप्ट्स डेवलप करोगे तो आपको ये चीजें याद आएंगी. तो इसीलिए ये कंसेप्ट अभी से क्लियर कर लो कि 3D की एनर्जी किससे कंपेरेबल है, 3s और 3p से, 4s और 4p से,
लेकिन 3p और 4s की एनर्जी आपस में कंपेरेबल नहीं है, इसीलिए ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो ये हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। आज का टॉपिक है sp3d hybridization. Your sp3d hybridization. In sp3 hybridization, we have one s orbital and 3p orbital combining with 1d orbital to form 5 sp3d hybrid orbitals. Here 5 sp3d hybrid orbitals are formed. The example of phosphorus pentachloride PCl5. The atomic number of phosphorus is 15. So its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Now, same concept हम लोग लगाएंगे बेटा अपना. This is a 3s, 3p, and with 3p we have associated 3d. Now, the electrons present over here in 3s, 2 electrons, 3p, we have 1 electron and they are in the half filled, 3 electrons half filled. Now, to form the bond with 5 chlorine atoms, we require the 5 unpaired electrons, and the 5 unpaired electrons could only be possible when 1 electron from 3s gets excited to 3d. So, we can say promotion of electron takes place. Promotion of electron. 1 electron will get transferred from 3s to 3d. After promotion of electron, what will be the state? We have 3s, 3p, 3d, and now the number of electrons in each 1, 2, 3, 4, 5. Now 5 unpaired electrons are available. Therefore, these 5 orbitals will undergo hybridization. Which hybridization? sp3d hybridization, and we will get 5 sp3d hybrid orbitals of equivalent energy, each having 1 unpaired electron. 5 sp3d hybrid orbitals. These 5 sp3 hybrid orbitals are arranged in trigonal bipyramidal geometry having a bond angle of 120 degree and 90 degree. Now we will draw the structure of PCl5. We have trigonal bipyramidal geometry, and this trigonal bipyramidal geometry is represented like this. We have a trigonal, means a triangle in which phosphorus is at the center, and these are the 3 bonds with the chlorine atom, and the 2 chlorine atoms are perpendicular to the axis. This is the geometry, shape of the geometry. It is called as trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal, and the bond angle is these bond angles are at 90 degree, whereas the bond angles this one are at 120 degree. Now, these 90 degree axial bond are known as axial bonds, whereas
The bonds which are present on the equator or the equatorial triangle are known as equatorial bonds. यानी कि इस PCl5 के अंदर दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड्स, द अदर इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. The axial bonds are longer than the equatorial bonds, and this can be understood by their bond length. The bond length of the equatorial bonds are 204 picometer, while the bond length of the axial bonds are 214 picometer. तो बेटा देखो, यहाँ पे हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, in which the bond angles are 3 at 120 degree while the 2 at 90 degree. तो दो बॉन्ड एंगल्स होते हैं हमारे पास, 3 हमारे पास 120 डिग्री के होते हैं और 2 हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं. Important points for this PCl5 molecule is the axial bonds suffer more repulsion than equatorial bonds, and therefore they are longer than equatorial bonds. यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसी वजह से ये बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं ये ज़्यादा लंबे होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के मुकाबले. तो इस वजह से ये जो PCl5 मॉलिक्यूल होता है ये रिएक्टिव बन जाता है. ड्यू टू दिस PCl5 molecule becomes more reactive. और ये कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये रिएक्टिव बन जाता है बेटा? तो देखो बेटा, ये जो मॉलिक्यूल रिएक्टिव है इसको हम शो करते हैं कि अगर हम PCl5 मॉलिक्यूल को, जो हमारा गैसियस है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो हमें PCl3 और Cl2 मॉलिक्यूल मिलता है. यानी कि ये PCl5 मॉलिक्यूल आसानी से PCl3 और Cl2 में टूट जाता है. ये जो Cl2 मॉलिक्यूल है ये कहाँ से आया है? ये आया है जब एक्सियल बॉन्ड्स हमारे ब्रेक करते हैं, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड की लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा है, इसीलिए वो जल्दी ब्रेक कर जाते हैं. एंड देयर विच मेक्स द PCl5 मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव. बेटा क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आप लोगों से पूछे जाते हैं, है ना, कि आपके पास कौन से बॉन्ड ज़्यादा, क्वेश्चंस आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं. Are all the bond angles in PCl5 molecules equal? No. The 3 bond angles are at 120 degree while the 2 are at 90 degree. Are all the bond length equal? No. The 3 bond lengths are same while the 2 bond length of the axial bonds are longer than the equatorial bonds. Why PCl5 molecule is reactive? Because the axial bonds are unstable, they can easily be dissociated. So PCl5 easily dissociates as PCl3 and Cl2 molecule. So this is about your PCl5 molecule. You can note it down. Take a screenshot, note down, learn, make clear the concept. Now the next is your sp3d2 hybridization. The second is sp3d2 hybridization. In this, 1s orbital mixes with the 3p orbital and 2d orbital to form 6 sp3d2 hybrid orbitals. Here the example is of sulfur hexafluoride.
In sulfur hexafluoride, the atomic number for sulfur is 16. So its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Here 3d shell is vacant. So if we write it in the another notification, then it is 3s, 3p and 3d, which is vacant in this case. So the number of electrons present in 3s is 2, 3p 1, 2, 3, 4. Now what happens over here, since we require the 6 unpaired electrons to form the bond with the fluorine atom, here we have only 2 unpaired electrons. So 1 electron from the p orbital and another electron from the s orbital will jump in 3d orbital. Here we say that the promotion of not a single electron but electrons takes place. And when we have the 2 electrons promotion, now the condition will be this one, having 1 electron in 3s, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 3s1, 3p3, then 3d2. So we have the 6 unpaired electrons. These 6 unpaired electrons will undergo hybridization to form sp3d2 hybridization to form 6 sp3 hybrid orbitals having 3, 4, 5, 6. Having 6 unpaired electrons. So 6 sp3d2 hybrid orbitals. Here the geometry goes as octahedral. कौन सी geometry होती है यहाँ पे? Octahedral. And the bond angle is 90 degree. All the bond angles are at 90 degree. So the 4 SF bonds are directed 90 degree to each other at the 4 corners of the square, while one above the plane while the other below the plane is directed at an angle of 90 degree. So the bond angle is 90 degree. It is a regular geometry. It is a stable molecule. Therefore SF6 is less reactive. So this is a geometry for sp3d2 hybridization. Now we will see sp3d3 hybridization. This is your sp3d3 hybridization. In this, 1s orbital mixed with the 3p orbitals and 3d orbitals to form 7 sp3d3 hybrid orbitals. Example of this hybridization is IF7, iodine heptafluoride. It is an interhalogen compounds. Interhalogen compounds are when the two halogens combine together, they form the interhalogen compounds. So in IF7, the central atom is your iodine. Its atomic number is 53. If we write its electronic configuration, then it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p5. So the outermost electronic configuration is 5s2, 5p5. So the electrons which are involved in hybridization are from 5s, 5p and the 5d orbitals are vacant. Here we have 2 electrons in 5s and 1, 2, 3, 4, 5. 5 electrons in 5p. Now we require 7 unpaired electrons, and that could only be possible
when there is the promotion of 3 electrons. कितने electrons promote होंगे अब? अब हमारे पास 3 electrons promote होंगे in the 3,5D. So here promotion of electrons will take place and we will have here 5s, 5p, 5d. Now they will have the 7 unpaired electrons. They will undergo hybridization sp3d3 hybridization to form the 7 hybrid orbitals, each having 1 unpaired electrons. So we have 7 sp3d3 hybrid orbitals. What is the geometry? The geometry is pentagonal bipyramidal. In this pentagonal bipyramidal, we have a pentagon in which iodine is present at the center, and we have the 5 fluorine atoms at the corners of the pentagon, and the bond angle for this is 72 degrees. Now the remaining 2 fluorine atoms will form at the 90 degree, one above the plane, the other below the plane, and they are at the 90 degree. So this is the geometry for IF7, which is your pentagonal bipyramidal. This is our geometry in which we have 5 IF bonds at 72 degree and 2 IF bonds at 90 degree. So this is the geometry for sp3d3. Now the most important thing, the trick which you have to remember in this, that is, अब बेटा देखो, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर दिया है तो अब हमें ये देखना होगा कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर sp हाइब्रिडाइजेशन. इसमें बेटा s ऑर्बिटल मिक्स करता है किसी भी p ऑर्बिटल से, और ये कोई सा भी एक्सेस हो सकता है, आइदर px, py और pz. द शेप इज लीनियर. Bond angle is 180 degree. Example is BeF2. The second is your sp2 hybridization. In this, s orbital can mix up with any of the p orbitals. और यहाँ पे हमें 2 p orbitals इन्वॉल्व करने हैं, तो ये कोई से भी हो सकते हैं, px वाला, py, pz, कोई से भी हम इसमें से 2 orbitals इन्वॉल्व कर सकते हैं. The shape is trigonal planar and the bond angle is 120 degree. The example goes as BF3. The third is your sp3 hybridization. In this, s orbital is mixed with px, py and pz to form the 4 hybrid orbitals, and the shape is tetrahedral with a bond angle of 109 degree 28 minute. The example is the methane molecule. Next, angle of 109 degree 28 minute. The example is the methane molecule. Next comes sp3d. Here the s orbital is mixed with px, py and pz orbital, and the d orbital involved is dz square. ये आपको याद रखना है कि dz स्क्वायर ही क्यों इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाता है pz ऑर्बिटल के संग. तो यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं. जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास s ऑर्बिटल px और py को मिला के बनाते हैं, और जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो pz और dz स्क्वायर को मिलके बनते हैं. तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है शॉर्ट में समझाने के लिए. तो इसका एग्जाम्पल आता है बेटा PCl5. ये आपका कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है. इट इज़ द dz स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन. In sp3d2 hybridization,
The d orbitals involved is dz square and dx square minus y square. क्यों यही वाले दो इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी जो होती है वो सेम होती है. तो जिनकी एनर्जी सेम होगी वही ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. तो sp3d2 में s px py pz and dz square and dx square minus y square orbitals are involved. The shape is octahedral. The bond angle is 90 degree. The example is sulfur hexafluoride. The last is your sp3d3. Here s orbital is mixed with px, py, pz, and now the d orbitals are dxy, dyz and dxz. ये वाले ऑर्बिटल्स हम इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है. द शेप इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल. The 5 bond angles are at 72 degree while the 2 are at 90 degree. The example is IF7. Hope you have understood the hybridization involving the d orbitals. Learn this table by heart. There are many questions which comes from this table, and this is the basic for the further examples involving the Vesper theory and the other tricks of the finding the hybridization. So all the things in the table should be learned by heart to you. Thank you.